Hi everyone, there we are doing Test Yourself from chapter 7, Sound and Hearing. The first question from this chapter is, how do humans and other animals detect sound energy? We all detect sound energy with the help of our ears. हमारे जो कान हैं ये वाइब्रेशनल एनर्जीज को कलेक्ट करते हैं, इसको पास करते हैं थ्रू द ट्यूब विच इज़ कॉल्ड ईयर कैनाल से ये पास होकर ईयर ड्रम से टकराती हैं, वो वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन बोन्स को ट्रांसफ़र करता है and then to cochlea and then to your nerves. Sound energy is nothing but these are vibrations. These are air particles vibration. These are the vibrations of the particles जिस भी medium से ये move कर रही हैं. So humans and other animals detect sound energy by their ears. Ears are energy changers. Vibrating air passes through the ear canal and causes the eardrum to vibrate. Vibrations pass through the middle ear. These vibrations set the fluid moving in the inner ear, which is cochlea, and moving fluid sets up signals inside the nerve cells. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर साउंड्स मेड? साउंड्स कैसे बनती हैं जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है और वो वाइब्रेशंस ट्रांसफर करती है टू द मीडियम इन विच इट इज़ प्रेजेंट. सो वही वाइब्रेशंस कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन जनरेट होते हैं एंड वो आप तक ट्रैवल करती है. सो वी कैन आंसर इट इन द वे दैट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स. When an object vibrates, it causes movement in surrounding air molecules. These molecules bump into the molecules closer to them, causing them to vibrate as well, and so on. Sound waves needs medium to travel. किसी भी medium में travel कर सकती है, either solid, liquid and gas, but it needs medium. Next question, name two musical instruments जिनमें vibrating string हो, जिसमें आप air blow करें और जिसको आप hit करने से sound produce कर सकें. So by vibrating we have violin, guitar, banjo, and by air blowing we have flute, clarinet, saxophones, and by hitting we have xylophone, bass drum, and piano. Then the next question is, explain how human produce speech sounds. हम speech sound produce करते हैं by our vocal cords, और vocal cords vibrate करते हैं, और vibrate ये कैसे करते हैं? By the air which is blow out from the lungs. So actually these all things are included here. Your voice box, your larynx, that is included. So we can answer it in the way that humans produce speech sounds by vibrating vocal cords. Vocal cords are two muscular bands inside your voice box larynx. Air from the lungs blows through the vocal folds, which causes vocal folds to vibrate. The vibrations lead to sounds known as speech or voice. Next question, explain how we hear the sound when a drum is hit. जब आप ड्रम को हिट करते हैं, ड्रम की स्किन वाइब्रेट करती है, इट मूव इनवर्ड एंड देन आउटवर्ड, एंड ये मुसलसल वाइब्रेशंस होती रहती हैं. सो जब वो इनवर्ड वाइब्रेट करता है, एयर के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्पेस मिलती है, रिफ्लेक्शन जनरेट होती है, और जब वो वापस ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है तो कंप्रेशन जनरेट होता है, एंड सो ऑन. ये कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन आगे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं एयर की कंजक्टिवली उनको ट्रांसफर होता है. So we can answer that we hear the sound when a drum is hit because the vibrating drum skin create sound waves. The drum skin moves alternatively outward and inward, which causes the compressions and retractions in air. The air passes these vibrations to the ears. Next question, what evidence is there that sound travels through gases, liquids, and solids? We can simply, give the example of humans क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपस में and we are in the medium air, so that means एयर से पास करती है. हम पानी में हम शावर लेते हुए, हम स्विमिंग करते हुए बात कर सकते हैं. हम अगर एक रूम से दूसरे रूम में बात सुनना चाहें तो सुन सकते हैं by pressing our ears with the wall or the door or window. So that proves. So people hearing others speak is a proof that sound travels from a gas. People hearing sounds while submerged in a pool is a proof that sound travels from a liquid. And people hearing sounds with their ears pressed against a table, that is a proof that sound travels from a solid. Next question. Explain why sounds cannot travel in a vacuum. We already discussed that sounds are vibrations, और vibrations को transfer करने के लिए particles की ज़रूरत होती है, and vacuum में कोई चीज़ नहीं होती. That's why. So sound waves are series of compressions and reflections. These are mechanical waves which needs a medium to propagate. Vacuum is a white space where no matter particles are present, so sound cannot travel through a vacuum because there are no particles present for vibrations to pass through. Next question. What are sound waves? Sound waves are a series of compression and refractions. These are mechanical waves which need medium to travel.
Next, in sound waves, what is the distance between compressions called? दो compressions, the दो rare fractions का जो distance होता है उसे wave length कहा जाता है. एक wave की length consider किया जाता है. You can draw it as well to show that what the wavelength is, and here the diagram is showing as well. Next question, what is longitudinal waves? Longitudinal waves वो waves होती हैं जिसमें, for example, अगर we are talking to the person in front of us, तो हमारी आवाज़ directly travel करके उसके कानों तक जा रही है. जो एयर के पार्टिकल्स वो भी उसी डायरेक्शन में बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करते हैं. सो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी वेव ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट और आपके पार्टिकल्स अप डाउन ट्रैवल कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल द वेव इन द सी की जो वेव है वो आगे की तरफ आती है टूवर्ड्स द बीच, बट जो पार्टिकल्स हैं वाटर की वो ऊपर और नीचे की तरफ ट्रैवल करते हैं. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव्स वेयर द मूवमेंट ऑफ द मीडियम is in the same direction as the direction of the wave travel. So sound waves are longitudinal waves. Next question, how are sound waves different from the waves in the sea or the ripples on the water? As I discussed earlier, that sound waves are different from the waves in the sea or the ripples on water because sound waves are longitudinal waves. These are the waves in which the movement of the medium is in the same direction as the direction of the wave travel. Waves in the sea or ripples on water are the waves where the movement of the medium is the perpendicular direction as the direction of the wave travel, and these are called transversal waves. So two types of waves are there, transversal waves and longitudinal waves. Then the next question is, you can show the diagram as well. Longitudinal waves को आप show कर सकते हैं on the spring. Sound waves इसकी example है, और transverse को आप ऐसे जैसे proper wave generate होती है समंदर के अंदर या पानी के अंदर ripples generate होते हैं उस तरह से show कर सकते हैं. So this is all from this section.